Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we again start our lecture. We were doing the short question of first chapter of second year physics book. Now the question number 6. If a point charge Q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? Rectilinear motion means a motion along a straight line. Rectilinear motion means along a straight line. जो मोशन सीधी लाइन के साथ होती है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो कहा करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो उसकी डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि वो इन द सिंगल डायरेक्शन है। इसका मतलब ये निकला कि व्हेन वी रिलीज़ अ चार्ज क्यू ऑफ मास m in the field, it will move along the electric field, that is along a straight line. So the motion of the charge will be straight or rectilinear motion. Next question. Is E necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical? Assume the charge is distributed uniformly over the surface. Yes, we know from the Gauss law, phi is equal to q over epsilon naught. As charge is distributed on the outer surface of the balloon and there is no charge inside the balloon, so q will be 0 inside the charged rubber balloon. So phi is equal to Ea, this is the formula for electric flux, or phi is equal to 0 over epsilon naught. As area of the balloon is not equal to 0, so E is 0. Hence E is necessarily 0 inside a sphere of a rubber balloon sphere. The next question is it true that Gauss law states that the total number of lines of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? Yes, this is right. You can write in this way, yes, it is true. और यही जो सेंटेंस है इसको लिख दीजिए, ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है इसे ख़त्म करके यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, ये आपकी 2-3 लाइनें बन जाएंगी। और इसके बाद आप लिखिए कि फ्राम गॉस लॉ वी नो दैट फाई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वेयर फाई इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस। तो इस तरह से हम ये साबित कर सकते हैं कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भला, जो टोटल चार्ज है एनक्लोज्ड इन अ सरफेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th. डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल? याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसा कि आपको दिखाया गया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, और अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे तो इट विल मूव फ्राम अवे फ्राम द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ फ्राम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कीप इट इन योर माइंड कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्राम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल।